Assalamu alaikum, dear viewers and students. Uh, Today I have presented very important topic. It is related to the ICT training workshop for teachers, students, and professionals. What is ICT? And in this session, I will cover four major areas: the ICT, the use of artificial intelligence and impact of artificial intelligence in education. Similarly, what is machine learning? A difference between artificial intelligence and machine learning, and what are the current application of machine learning in education sector of Pakistan and in developed countries. Similarly, what are the features of artificial intelligence and example of the artificial intelligence that are currently being used in higher education for higher education. Similarly, different educational platforms that are based on artificial intelligence and what is machine learning. Similarly, uh, intelligent roboting, speech recognition, advantages and disadvantages of machine learning. And in the second session, I will cover the topic cloud computing, its applications, and its advantages and disadvantages, especially in education sector, especially for schools, colleges, and similarly smart schools, smart colleges, and smart classroom, smart uniform, and online video conferencing. Now let's start the first session. What is ICT training? The role of ICT in education is to improve the teaching professional capabilities, to improve the teaching methodologies and the learning capabilities of student in an effort to become more aware of the dynamic world around us. ICT means that कि हम जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उसको एजुकेशन के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कैसे उसको एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करें और अपनी एजुकेशन को हम बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम उसको प्रोडक्टिव बनाएं. Today, the topic I will cover in the first session, the ICT, role of ICT in education, artificial intelligence in education. What are the feature of artificial intelligence? Kids play games in natural language. Examples of artificial intelligence in higher education, machine learning and artificial intelligence, machine learning in education, intelligent robots, speech recognition, image recognition, advantage and disadvantage of machine learning. And similarly, in the next session, we will cover what is cloud computing, implementation of cloud computing in the education system, what are smart classrooms, smart school system, and smart uniform. Example of smart school in Pakistan, building block of smart school, what is video streaming, why should teacher use videos in the classroom, how can video help teacher and student in the classroom, video conferencing, computer-based examination system, benefits of smart school, and common ICT tools used in our school. Today, you all are seeing the picture on the screen, and this picture shows that in jungle a man is sitting and he asked from all the animals that for a fair selection everybody has to take the same exams. Please climb that tree. अब ये पिक्चर शो करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि सब एनिमल्स ने एक जैसा एग्जाम देना है और एग्जाम ये कि उन्होंने इस दरख्त इस ट्री के ऊपर क्लाइम करना है, इस ट्री के ऊपर चढ़ना है. अब डेफिनेटली जो एलिफेंट है, जो बड़े जानवर उसके ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे. ठीक है, तो यानी इस मुराद ये कि आवर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि रटा सिस्टम है. और नाउ इट इज वेरी appreciable that the federal boards and our other boards are moving towards the concept based learning, SLO based concept based education, and they have implemented this SLO based education system in current exams so that
आवर स्टूडेंट शुड नॉट बी बुकिश, एक बुक तक फॉलो नहीं हो, बल्कि उनका एक टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट्स उनके क्लियर हो और उनकी एक टॉपिक के ऊपर कंप्रीहेंशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो वो इंक्रीज हो और डिफरेंट बुक से वो कंसल्ट करके एक टॉपिक को तैयार करें. So what is ICT? As you see that ICT is the implementation of computer system, communication devices and software applications for the purpose of educational, to store the educational videos, to protect and transmit and retrieve the videos information from anywhere by using internet. यानी एजुकेशन में जो आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आईसीटी बन जाता है. ठीक. और इसकी जो एडवांस फॉर्म में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो स्मार्ट स्कूल्स और स्मार्ट कॉलेजेस की फॉर्म में हमारे सामने आ रही है. The role of ICT, definitely इसका जो रोल है to provide the quality education and to increase the standard, to provide the prospects and trends of integrating information and communication technology into the general education activities. इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इसका रोल और इसकी इम्प्लीमेंटेशन है. और we have seen that in the previous 2 years during COVID, we have implemented all the ICT tools. We have taken the online classes on Zoom app, and we have implemented the test and examination system through Google Forms, and in which automatically we have done the grading of the student, and we have arranged their position, result announcements, online sessions, PTMs on Zoom, all that things that are for educational point of view, that are very important for educational point of view, we have conducted through the by using of ICT through internet in our institution. Now come to the artificial intelligence. What is artificial intelligence? Basically, artificial intelligence, it is a way of making a computer, robot or software think and act like a human. You are seeing the picture on the screen कि कंप्यूटर डिवाइसेस को इतना एक्टिव बना दिया जाए, उनके बिहाइंड जो एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग है, उसको इतना शार्प कर दिया जाए कि वो इतने एक्टिव algorithms हों कि they respond in the same way in which critical condition a human beings can perform. कि a human being can take decisions on any critical condition, and human being can performs and can select a best optimistic path from multiple paths. In the same way, computer and machines should be so efficient that the computer and machine can decide itself for the best path and they can take their decision. अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये रोबोट्स हैं. We have seen that the robots are, many developed countries are, they have implemented their robotics technology in defense में robots काम कर रहे हैं, defense में drones काम कर रहे हैं, drones और जो बगैर पायलट के और drones ऑपरेट कर रहे हैं और सक्सेसफुली. सिमिलरली आप देख रहे हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार का जो कंसेप्ट है कि कुछ डेवलप कंट्रीज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि बगैर उसके ड्राइवर के जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो पैसेंजर को एक पाथ से दूसरे पाथ तक लेके जाती है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि तमाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो पैसेंजर को लेके जाती है. ठीक है. इसी तरह ऑटोमेशन है कि हर चीज ऑटोमेशन है और हर चीज मशीन्स के थ्रू, जहाँ पे जो मेन पावर उसको रिड्यूस कर देगी और मशीन उन तमाम कामों को परफॉर्म कर रही है. So the definition of artificial intelligence is the simulation of human intelligence process by machines, especially computer system. Specific application of artificial intelligence include expert system, natural language processing, speech recognition and machine vision. Expert system is directly related to the robot system कि हम मेडिकल फील्ड में, डिफेंस में और सिमिलरली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी हम रोबोट्स को ला रहे हैं, रोबोट्स हो रहे हैं. अब टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर की जगह रोबोट्स हैं, वो आप लेक्चर देंगे. प्रोफेसर और डॉक्टर्स, टीचर्स का काम सिर्फ ये कि उनको बिहाइंड द बैठ के, उनको बिहाइंड द सीन उनको डायरेक्शन देना और वो तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे. इसी तरह रोबोट्स डिफेंस में भी यूज हो रहे हैं और रोबोट्स जो है ना, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एक बहुत वास्ट एरिया और वो आपके बिजनेस सेक्टर में भी यूज हो रहे हैं. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस ये कि जितनी भी आपकी डिवाइसेज हैं, स्मार्ट डिवाइसेज हैं, इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग के, वो इस लेवल पर हों कि आपके नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके आगे वो एक्शन परफॉर्म करें, और इसकी बेस्ट एग्जांपल रोबोटिक्स की भी और आपके स्मार्टफोन की भी। इसी तरह स्पीच रिकॉग्निशन एंड मशीन विजन, कि आपकी जो मशीन के जो एल्गोरिदम है वो इतने एडवांस हो और इतने एक्टिव हों कि वो उसमें डिसीजन और लर्निंग जो है उसमें कैपेबिलिटीज मौजूद है। Artificial impact of artificial intelligence in education. Now you are looking the diagram. Artificial intelligence have integrated the following areas: sociology, computer science, psychology, neuron sciences, biology, philosophy और mathematics. And इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर सिस्टम साइंसेज में इम्प्लीमेंट हुई है, तो ये तमाम चीजें स्मार्ट डिवाइसेज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो साइकोलॉजी में इम्प्लीमेंट हुई है, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसी को वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन दी मशीन। और सोशियोलॉजी में इट हैव ग्रेट revolutionary steps, revolutionary impact on sociology we have seen. Similarly in mathematics, philosophy, biology और न्यूरल साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क। कि जिस तरह न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में काम करते हैं, इसी तरह जो मशीन्स के अंदर जो सेंसर्स होते हैं, जो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, वो भी किसी भी तरह के रिएक्शन के ऊपर वो डिसीजन लेके, खुद से डिसीजन लेके वो आगे से परफॉर्म करें। Artificial intelligence in education. Artificial intelligence is the ability of a machine to display human-like capabilities such as reasoning, learning, planning and creativity. यानी ये वो काम है जिसमें डिसीजन इन्वॉल्व होती है, रीजनिंग, लर्निंग, प्लानिंग और क्रिएटिविटी। Similarly, artificial intelligence enable technical system to perceive their environment, deal with what they perceive, solve problem and act to achieve a specific goal. कि वो खुद से डिसीजंस और खुद से वो उसमें थिंकिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी जो उसमें डेवलप हो गई। These are the features of AI that are being used in our current scenario, in our current environment. You can see that the facial recognition, data ingestion, quantum computing, deep learning, similarly automate tasks, cloud computing or chatbots. Okay, all these are the features of AI that different companies have developed these features in their software as a tool, and now we are using these features of AI. अब हम देख सकते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन, आप स्मार्टफोन में भी फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक्स है। इस ऑटोमेट टास्क आपके उसमें गूगल असिस्टेंट है या गूगल होम है, जो आपके कई टास्क को वो एज खुद ब खुद परफॉर्म कर देता है, जो आपके उसके टास्क है अगर आप उसमें डाटा फीड कर दें। डाटा इंजेक्शन है, इसी तरह क्लाउड क्लाउड डेटा इंजेक्शन के डाटा की सॉर्ट आउट करना, इंपॉर्टेंट डाटा को अलग करना, और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से हर यूजर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से डाटा को इंजेस्ट करना। क्लाउड कंप्यूटिंग इटसेल्फ एक वास्ट फील्ड है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी क्योंकि एआई है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। सिमिलरली क्वांटम कंप्यूटिंग एक लेटेस्ट कंसेप्ट है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और चाइना ने एक बड़ी क्वांटम डिवाइस, क्वांटम कंप्यूटर भी डेवलप किया है, और जो कि आजकल के जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्वांटा के ऊपर बेस करता है। हमारे जितने भी कंप्यूटर डिजिटल वो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस करते हैं, जिनमें दो फॉर्म होती है 0 1 की, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फील्ड क्वांटा के ऊपर बेस करता है, जिसमें सिर्फ दो फॉर्म्स नहीं है बल्कि उसमें मल्टीपल फॉर्म्स है। इसी तरह चैटबॉट्स जो कि ऑनलाइन डिस्कशन के लिए चैटबॉट है, कि वो आप उसमें जो कंपनी के पॉलिसीज और प्रोसीजर उसमें कर दें, फीड कर दें, तो वो उसी के मुताबिक यूजर्स को जो भी उससे इंटरेक्ट करते हैं वो उसके परफॉर्म करते हैं। You are seeing the picture of kid playing games in natural language. We have seen that in our home, kids ask the smartphone about any cartoon or any games, and the Google search display that cartoons on the screen. कि kids भी नेचुरल लैंग्वेज का वो इंग्लिश है, उर्दू में अपने स्मार्टफोन से बात कम्युनिकेट करते हैं और वो उनकी लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं और वो करते हैं।
Game playing is an important domain of artificial intelligence. Game does not require much knowledge. The only knowledge we need to provide is the rules, legal moves, and the condition of winning or losing the game. Both players try to win the game, so both of them try to make the best move possible at each turn. Example of how artificial intelligence is currently being used in higher education. हायर एजुकेशन में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया गया उसमें ये फॉलोइंग एरियाज है, इसमें प्लेजरिज्म डिटेक्शन में, एग्जाम इंटीग्रिटी में। अब जितने भी कोविड में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करी थी यूनिवर्सिटी, यू हैव सीन दैट ऑल द एग्जाम वर कंडक्टेड ऑनलाइन बाय यूजिंग डिफरेंट मल्टीपल मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। उसमें आप जूम भी कह सकते हैं, उसमें गूगल क्लासरूम भी है, उसमें और डिफरेंट मल्टीपल उसमें हैं, वो उसमें एग्जाम कंडक्ट करें। सिमिलरली चैट बॉट फॉर इनरोलमेंट एंड रिटेंशन, चैटबॉट्स जो है ना वो उसके लिए ऑनलाइन कन्वर्सेशन के लिए चैटबॉट यूज हो रहा है। और उसमें सिमिलरली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फैकल्टी लेक्चर्स, इनहांस्ड ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स हैं, जो ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर रेलेवेंट टीचर्स एंड टीचर रिस्पॉन्ड देम। एनालाइजिंग स्टूडेंट सक्सेस मैट्रिक्स, ऐसे बेशुमार सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट एनालिसिस करते हैं उनके डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डोमेन्स में। फॉर एग्जांपल फॉर इन देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट उन्हें एनालिसिस करते हैं फॉर देयर कम्युनिकेशन स्किल एंड देयर लीडरशिप स्किल, इंग्लिश लर्निंग स्किल और एनी अदर लैंग्वेज लर्निंग स्किल, और देयर IQ, similarly emotional intelligence. All these things can be measured by applying different AI available tools. Similarly, academic research में AI have great impact in research sector. Research sector में AI के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अब these are the example of educational platform that are based on AI. वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि इस वक्त मार्केट में इनके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप यूज कर सकते हैं। इनमें थर्ड स्पेस लर्निंग है, लिटिल ड्रैगन है, ब्रेनी, CTI है, कार्नेगी लर्निंग है, थिंकर मैथ्स। अब ये पूरी अलग फील्ड डोमेन है, तो इसलिए you can use these software and these are based on artificial intelligence technology. I will discuss one, thinker maths. This AI based resource assists people or student in learning maths. It has ton of games and awards that motivate learner and boost engagement. Best of all, this application provides a learning schedule that's informed by the people's knowledge. कि इसमें टन्स के गेम्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें गेम्स के लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये लर्निंग मैथ्स, ये वो गेम्स है जो कि मैथ से रिलेटेड है, जिसमें एक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है और वो लेवल्स को अचीव करता है और वो उसमें उसको रिवार्ड भी मिलते हैं कॉइन्स की सूरत में, किसी भी सूरत में, किसी भी फॉर्म में। और इससे उसका जो IQ लेवल है वो मैथमेटिक्स में और उसकी अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंसिव पावर जो मैथमेटिक्स के फार्मूला अंडरस्टैंड करने में उसकी इंक्रीज होती है। इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट AI एम्बेडेड टूल, AI बेस्ड रिसोर्स टूल अवेलेबल हैं गूगल्स के। Now come to the next important thing, what is machine learning? And we can see that machine learning basically it is the branch of artificial intelligence and computer science which focus on the use of data and algorithm to imitate the way that human learn, gradually improving its accuracy. तो machine learning में we are scientists are computer scientists are working to develop such as intelligent algorithm that perform the same way in critical condition just like the human being perform, and it is they are trying to improve its accuracy. See, this picture show the clear relation of artificial intelligence, machine learning and deep learning. What is the impact of machine learning in education? Machine learning in education is the form of a personalized learning that could be used to give each student an individualized educational experience. Here, the students are guided for their own learning and can follow the pace they want and make their own decision about what to learn and develop a passion for learning. अब मशीन लर्निंग में के ऐसे टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि जो कि स्टूडेंट्स का एनालिसिस करते हैं। वो स्टूडेंट को एक खास फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए स्टूडेंट्स का एनालिसिस करते हैं
अब उसके अंदर ऐसे एल्गोरिदम मौजूद है जो स्टूडेंट्स के डाटा को एनालिसिस करके स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि भाई आपका जो ट्रस्ट है वो इस फील्ड में, वो फिजिक्स में या कम्युनिकेशन स्किल में, ये आपका जो इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में, और जो आपकी जो डेफिशिएंसीज है वो इस फील्ड में। स्टूडेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग टूल यूज करके अपनी इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसको इनहांस कर सकता है और अपनी किसी भी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज को इम्प्रूव कर सकता है। You are seeing the picture that the teacher is teaching in the class, and in the future we have listened that robots will replace the teachers in the class, and teacher will guide the robots to perform specified tasks in the classroom. These robots that can perform specified tasks in the classroom, in the business, or in the defense, these are intelligence robots, because intelligence robots robotics are based on artificial intelligence. Intelligent robots will read student faces, movement, and maybe even brain signals. Then they will adopt information to each other. अब ये इतने इसके अंदर इतनी प्रोग्रामिंग है इंटरेक्टिव। Today the programming language that are used for intelligent robotics is the Python language. इससे पहले जो सिंपल रोबोटिक्स थे उसमें C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, बट इंटेलिजेंट रोबोटिक्स के लिए जो पैथॉन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है और फॉरेन कंट्रीज में एट अ स्कूल लेवल पे पैथॉन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, स्टूडेंट्स को उसमें डेमोन्स्ट्रेशन उनके रोबोटिक्स सिखाई जा रही है, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ द our society, these are becoming the part of our society. But the second, it's the point that is related to the drawback of intelligent robots, that it is not a popular opinion, and it's unlikely robots will ever have empathy and the ability to really connect with humans like other human can. कि रोबोट्स के अंदर वो फीलिंग्स और वो एम्पैथी और सिंपैथी नहीं होती जो कि एक ह्यूमन बीइंग्स होती है। जब एक ह्यूमन बीइंग्स देखें, जब हम एक ह्यूमन बीइंग, एक टीचर अंडरस्टैंड कर सकता है कि द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑन इन द मूड ऑफ लिसनिंग द ट्यूटोरियल वीडियोस, एंड रोबोट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड कि बहरहाल एक मशीन उस लेवल तक अभी वो डेवलप नहीं कर सके कि वो उसके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी और उस फीलिंग्स को डेवलप कर सके। Yes, too, it can take decisions, it can take decision itself, but it cannot be programmed in such a way that we can develop the human feelings in the robotics. Similarly, image recognition. Image recognition is a well-known and widespread example of machine learning in the real world. It can identify an object as a digital image based on the intensity of the pixel in black and white images or color images. Machine learning is also frequently used for facial recognition within an image. Using a database of people, the system can identify commonalities and match them to faces. This is often used in law enforcement. अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो सिटीज कैमरास लगे हुए हैं पूरे मुल्क में, कहीं भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सिटी कैमरा से वो उसमें जो कल्प्रिट होते हैं वो ट्रेस भी, उनके फेस ट्रेस भी हो जाते हैं और उनको नादरा डेटाबेस से उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा भी जा सकता है। और सिमिलरली जितने भी ड्रोन्स अटैक्स हो रहे हैं या जितने भी ड्रोन्स हो रहे हैं वो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन इमेज रिकॉग्निशन के। ड्रोन्स के अंदर ऐसे पावरफुल कैमरास लगे हुए हैं जो कि इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इमेज रिकॉग्निशन जो एक बहुत पावरफुल टूल्स है फॉर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी ड्रोन्स, एआई एम्बेडेड ड्रोन्स। इमेज रिकॉग्निशन तमाम फील्ड्स में, एजुकेशन फील्ड्स में भी यूज हो रहा है और मेडिकल फील्ड्स में भी कैंसर डिटेक्ट करने के लिए और डिफरेंट चीजें डिटेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। Similar speech recognition, I have already discussed that machine learning can translate speech into text. आप स्मार्टफोन में आप स्पीच बात करें तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। This is the artificial intelligence tool that is embedded in our smartphone by Android. Certain software application can convert live voice and recorded speech into a text file. The speech can be segmented by intensities on time frequency bands as well. Speech recognition, voice search, voice dialing, appliance control. Some of the most common use of speech recognition software devices are like Google Home or Amazon Alexa. ये वो चीजें, these are the things that we have already using on our by using our smartphone. हम अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू भी ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स कर रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड है, जो कि हमारे टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर, जो कि हमारी वॉइस कम्युनिकेशन को एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी एक मशीन आपकी नेचुरल लैंग्वेज को जब समझती है और उसके ऊपर डिसीजन लेती है तो दिस थिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मशीन लर्निंग एंड इट इज द ब्रांच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेडिकल डायग्नोसिस,
Machine learning can help with the diagnosis of disease. Many physicians use chatbot with speech recognition capabilities to discern pattern in symptoms. कि चैटबॉट डिस्कस करता है पेशेंट से और उसके सिम्टम्स कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके उसको सजेस्ट भी करेगा कि आपके अंदर ये डायग्नोसिस ये असिस्ट करेगा इन फॉर्मुलेटिंग अ डायग्नोसिस और रिकमेंड और ट्रीटमेंट ऑप्शन। कि चैटबॉट ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि पेशेंट से सारा डाटा लेंगे और उसकी सारे सिम्टम कलेक्ट करेंगे, सिम्टम उससे पूछेंगे और उसके बाद वो डायग्नोसिस भी करेंगे डिजीज को और उसका जो ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करेंगे। Oncology and pathology use machine learning to recognize cancerous tissues, एनालाइज बॉडली फ्लूइड्स। तो ये डिफरेंट उसमें फील्ड है, बायो की फील्ड है जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो यूज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो डॉक्टर्स की जगह जो रोबोट्स यूज हो रहे हैं किस कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में, दीज आर द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एआई। एंड लास्ट थिंग इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग। एडवांटेजेस के ऑटोमेशन ऑफ एवरीथिंग, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, efficient handling of data, best for education. And disadvantage क्या, possibility of high error, algorithm selection, data acquisition, time and space. अब इसमें इन द हमने शुरू की स्लाइड्स में देखा था कि ऑटो सेल्फ ड्राइविंग कार कि जिसको एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, देयर इज नो ड्राइवर सिटिंग इन द कार। In the highly developed area, what will happen if the brakes fail and if the car collide to any objects? अगर कार किसी सब ऑटोमोबाइल कार सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर वो किसी और कार से या किसी और मोबाइल से टकरा जाती तो उस केस में क्या उसका व्हाट विल बी द रूल्स, सॉफ्टवेयर उसको कैसे हैंडल करेगा और उसके ऊपर ट्रैफिक रूल्स कैसे इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, अब देखें हमारे कंट्रीज में तो इसका कंसेप्ट भी एक इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। एक कैंट एरिया में भी यहाँ पे हमारे सिग्नल्स के जहाँ रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, जहां पर भी वो कामयाब नहीं है। इफ वी कंसिडर इट दैट द सेल्फ ड्राइविंग कार इज ट्रेवलिंग ऑन द टेक्सला चौक और ऑन द रावलपिंडी और इन दिस कंजेस्टेड एरिया, इट इज इम्पॉसिबल कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार उसमें सॉफ्टवेयर है, उसमें पैसेंजर बैठे हैं और वो खुद बहुत चल रही है, खुद स्टॉप पे रुक रही है। हमारे स्टॉप्स भी ऐसे नहीं है, एक तरफ से ट्रक आ रहा है और उसमें रोड की भी कंडीशन नहीं है, ट्रैफिक रूल्स भी कोई नहीं है, देयर इज इम्पॉसिबल। बट इन दी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दे आर implementing the concept of auto car, self-driving auto car. There is no need of human interaction, there is no need of driver. But the question is, if there is any collision between car and any object, then what will the machine respond, what will the software respond in that particular condition, and what are the traffic rules for that circumstances? कि अगर गाड़ी किसी जगह लग जाती है या कोलिजन हो जाती है तो उस केस में ट्रैफिक रूल्स कैसे इंप्लीमेंट होंगे उस ऑटोमोबाइल के ऊपर जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स हैं। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ हाई एरर्स, सिमिलरली एल्गोरिथम सिलेक्शन में, डाटा एक्विजिशन में और टाइम और स्पेस में, कि हर जगह एक चीज को, बेशक एक चीज एआई एम्बेडेड है लेकिन उसको टाइम और स्पेस को डिपेंडेड है, हर जगह उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। So this was the our topics, and now in the second session we will study about the cloud computing and what are the cloud computing and what are its impact and what are the smart school, smart uniform, video streaming and online video recording, inshallah.